mathematical tools in physics, we were about to discuss the concept of scalars and vectors, and also we have seen the addition, subtraction, and the dot product and the cross product of the vectors. And today we are going to elaborate more things about dot product and cross product as well. तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में इनको डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन है वो हमको डिराइव करना है। सो जस्ट गो ऑन द बोर्ड and derive the expression for dot product and cross product. So suppose here a bar is expressed as ax I bar plus ay into j bar plus az into k bar. Okay. And b bar is expressed as bx into I bar plus by into j bar plus bz into k bar. And we have to derive the expression for dot product also as well as cross product also. So first of all, we'll try to find out the expression for dot product of the two vectors. So here it is, dot product. So a bar dot b bar. So a bar dot b bar will actually be equal to ax into I bar plus ay into j bar plus az into k bar. The dot product of this with another vector, that is bx I bar plus by into j bar plus bz into k bar. If we expand all these, then we can get this as a, first of all, ax into bx into I bar dot I bar plus ax into by into I bar dot j bar plus az ax into bz into I bar dot k bar plus यहाँ पे आएगा ay into bx into j bar dot I bar plus ay into by into j bar dot j bar plus third term is ay into bz into j bar dot k bar. Then here in the next step we have plus az bx into k bar dot I bar plus az into by into k bar
dot j bar plus az to bz to k bar dot k bar. Now, according to the definition of dot product, we have seen that I bar dot I bar is going to be 1. J bar dot J bar is also going to be 1. Then again J bar dot K bar is also equal to 1. At the same time, I bar dot J bar equal J bar dot K bar and also K bar dot I bar is going to be equal to मला 0. आवडतच नाही तो पहिले Yes. प्लीज अपना माइक म्यूट करिएगा. So I bar dot I bar, all the rest of them are 0. So here we can see clearly that this term will be on the left, this term will also be left, and at the same time this term will be left as it is. All the rest of the terms are going to become 0. So finally we get the result as A bar dot B bar, and that is equal to AX into BX plus AY into BY plus AZ into BZ. So this is going to be the expression for the dot product of two vectors. We'll see. तो कोई भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको इस तरह से मिल सकता है आराम से. So this is the expression for dot product. You don't know correctly. Now we'll see the expression for the cross product of two vectors. तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमको एक्सप्रेशन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे. Suppose it is the next derivation, that is about the cross product of two vectors. So let us see again. Once again we have the two vectors. Suppose A bar which is going to be equal to AX I bar plus AY J bar plus AZ to K bar, and again we have the other vector, that is B bar, which is expressed as B bar. It is going to be, suppose Bx into I bar plus By into J bar plus Bz into K bar. Okay, and suppose we want to find out the cross product. So A bar cross B bar. तो A bar cross B bar निकालने के लिए पहले हमको A bar और B bar के वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करने होंगे. तो A bar का वैल्यू रिप्लेस करके आपको मिल रहा है AX I bar plus AY J bar plus AZ K bar, and cross प्रोडक्ट बीच में है. अब दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा BX into I bar plus BY into J bar plus BZ into K bar as it is. And then we can expand this according to the formula for this distribution law. So we can get this as a AX into BX into I bar cross I bar plus the second term happens to be AX into
by into I bar cross j bar plus ax into bz into I bar cross j bar plus next term happens to be ay into bx into j bar cross I bar plus ay into by into j bar cross j bar plus here it is ay into bz into j bar cross k bar. So the next step is here plus az into bx into k bar cross I bar plus az into by into k bar cross j bar plus finally az into bz into k bar cross k bar. Now we'll see here according to the definition of cross product. क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे आई बार क्रॉस आई बार is going to be 0. Similarly, j bar cross j bar is going to be 0. And in the same way, your k bar cross k bar is also going to be 0. That means O bar. But I bar, J bar and K bar इनके बारे में ऐसा होता है कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे सपोज ये I बार है, ये सपोज J बार है और ये सपोज यहाँ पे K बार है. तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमेंगे, I बार क्रॉस J बार लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, J बार क्रॉस K बार ले लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और k बार क्रॉस I बार ले लेंगे तभी भी पॉजिटिव आंसर आएगा. और उसमें हम लिख सकेंगे कि I बार क्रॉस J बार is going to be K bar and at the same time J bar cross K bar is also going to be I bar and at the same time K bar cross I bar is going to be J bar. But उल्टा लेंगे, उल्टा J bar cross I bar लेंगे तो हमको नेगेटिव आंसर मिलेगा. इवन J bar K bar cross J bar करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा और I bar cross K bar करेंगे तो भी नेगेटिव आंसर हमको मिलेगा. तो उसमें आएगा J bar cross K bar. This J bar cross I bar first of all is going to be minus of K bar. दूसरा K bar cross J bar. K bar cross J bar is also going to be minus of I bar. And thirdly, I bar cross K bar is also minus of J bar. So all these results can be used here in this whole chapter. तो इसमें क्या है ना कि ये तीन टर्म्स जो है, फर्स्ट टर्म, फिर ये दूसरा जो टर्म है और ये तीसरा जो टर्म है, तो ये तीन टर्म्स जो है वो गायब होने वाले. They are going to become zero, and what we are left with is simply देखो यहाँ पे so first of all A bar cross B bar is finally going to be equal to, देखो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 0 हो गया, बाकी ये जो टर्म है ये बनने वाला है K bar. तो इसलिए इसको हम लिख देंगे AX BY into K bar प्लस अब ये सेकेंड टर्म जो है
ये वाला टर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आई बार क्रॉस के बार, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई बार क्रॉस के बार। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा माइनस जे बार आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस जे बार आ जाएगा, इसलिए माइनस साइन हम सामने रख देंगे और इसको लिख देंगे ए एक्स इंटू बी जेड मल्टीप्लाइड बाय के माइनस जे बार, तो ये जे बार हो गया। तो ये again in the next step these two terms are left as it is। तो ये टर्म के बारे में अगर हम देखते हैं ठीक से, तो जे बार क्रॉस ए बार वो कंटेन करता है। तो जे बार क्रॉस आई बार जो है वो हम जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जे बार क्रॉस आई बार इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ के बार, सो हियर इट विल बी नेगेटिव माइनस ऑफ के बार एंड ए वाई बी एक्स इंटू के बार। नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म देख रहे हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जे बार क्रॉस के बार जो है, जे बार क्रॉस के बार हमारे पास है आई बार, इसलिए यहाँ पे वो आ जाएगा प्लस आई बार, इसलिए इसको लिखेंगे प्लस ए वाई बी जेड इंटू के बार आई बार। देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो टर्म है इसमें हम देख सकते हैं के बार क्रॉस आई बार हमको दिख रहा है, और के बार क्रॉस आई बार क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा के बार क्रॉस आई बार होता है जे बार, तो इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस जे बार, तो इसलिए प्लस यहाँ पे आ रहा है ए जेड इंटू बी एक्स इंटू के बार, सॉरी के बार प्लस अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो के बार क्रॉस जे बार, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं के बार क्रॉस जे बार इज ऑलवेज माइनस ऑफ आई बार एंड दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ ए जेड बी जेड इंटू आई बार, तो ये टर्म हमको मिल रहे हैं एंड देन वी कैन सी दिस कैन बी रिटन एज, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं दो टर्म्स आई बार वाले हैं, अगर इनको लोकेट करते हैं ठीक से तो ये एक टर्म और ये एक टर्म जैसा कि हम देख पा रहे हैं आई बार कंटेन करते हैं, उनमें से अगर हम आई बार कॉमन निकाल के देते हैं सपोज, तो हमको ये मिल जाएगा ब्रैकेट में आएगा ए एक्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई बार, अगर ये टर्म और जे बार वाला दूसरा टर्म ये वाला, इन दोनों में से अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस साइन गया बाहर, अंदर में बचेगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इंटू जे बार बाहर एज इट इज, प्लस थर्ड टर्म जो है के बार कंटेन करने वाला, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है इनको हम इनमें से के बार कॉमन निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे बचेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स इंटू के बार, and then finally this takes the form of a determinant so that you can write a bar cross b bar finally becomes can be expressed as a expansion of a determinant whose first row can be occupied by this I bar, j bar and k bar. Second row will be occupied by this ax, ay and az, whereas the third row can be occupied by bx, by and ez. But if we expand this determinant, then we get this whole expression as it is, as a final. And hence you can see that this determinant form is more useful
to remember, and that's why we can say this whole expression is equivalent to the expansion of this determinant, and that's why this determinant itself is called as the formula for the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करना पड़ता है, जिसके अंदर ax by ax ay and az are the coefficients of the first vector, you can see clearly, and here bx by and bz are going to be the coefficients of the second vector respectively, and hence we can say this is going to be the cross product of two vectors. So the expression of cross product of two vectors is going to be like this.